Yes, today we have to discuss the session ending examination of क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है, एसएसटी का ये पेपर है, वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम है। समय 2.5 घंटे और टोटल अंक जो है 60 है। शुरू करते हैं। पहला सेक्शन ए, द रामचरितमानस इज रिटन इन। रामचरितमानस को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? द करेक्ट आंसर इज अवधी। ठीक है, ये यू कैन से। जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? और दिशा में। आगे चलते हैं। सवाई जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल हियर, जयपुर। खालसा वॉज सेट अप इन 1699 बाय गुरु गोबिंद सिंह। करेक्ट आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया क्या है? न्यूज़पेपर। The roadside hawkers sell what they sell? They sell the vegetables, they sell the fruits, they sell the plastic items, all of the above। ठीक है, इसका 6th का जो है डी आंसर होगा, all of the above। क्वेश्चन नंबर 7, why is weekly market called so? वीकली मार्केट को वीकली मार्केट क्यों कहा जाता है? हेल्ड ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। ठीक है, किसी हफ्ते के किसी पर्टिकुलर दिन में ये जो है रखी जाती है। व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इज लिंक्ड चेन ऑफ मार्केट? लिंक्ड चेन मार्केट का क्या होता है? आंसर इज प्रोड्यूसर एंड बायर। ठीक है, आगे चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इनर मोस्ट लेयर अर्थ की क्या होती है? कोर होती है। सबसे ऊपर की क्रस्ट होती है, ठीक है, और सबसे अंदर की कोर होती है, बीच की जो है मैंटल होती है। ऑन विच रिवर इज कोलकाता लोकेटेड? कोलकाता कौन से रिवर पर लोकेटेड है? हुगली रिवर। यहाँ से भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देवदार एंड फर्स आर टाइप ऑफ व्हाट? कॉनिफरस ट्रीज इज द करेक्ट आंसर। इज अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट। हेमिस इज इन द लद्दाख इज फेमस फॉर व्हाट? मोनेस्ट्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स पीपल ऑफ सहारा डिजर्ट वियर? सहारा डिजर्ट के लोग किस तरह के कपड़े जो है पहनते हैं? ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है, दे वियर हैवी रोब्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेम इन विच अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। कंटिनेंट का नाम लिखना जहाँ पर अमेजन बेसिन स्थित है, साउथ अमेरिका। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ये बताना है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। डिफाइन द टर्म होलसेल। होलसेल क्या होता है? दिस रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। व्हाट इज मीडिया? Media is a plural word of medium. It describes the various ways through which we communicate in society. ठीक है, आगे चलते हैं। How were pigeons the pastoralist important of a Shivaji? The pigeon pastoralists provided the backbone of Maratha army. Shivaji used these forces to challenge the Mughals in the peninsula. ठीक है, नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descent? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है, that is what? The Mughals were descendant of two great lineages of rulers from their mother's side, as they were descendants of Genghis Khan, ruler of Mongol tribes, and their father's side they were successor of Timur, the ruler of the Iran, Iraq, and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mongols because of Mongols, especially Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks and Mongols competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry because it is achieved good name in the history. ठीक है, और इसका और ऑप्शन में क्या है? 20 का और, व्हाट वर द रोल्स ऑफ जमींदार्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में
मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? देखते हैं। हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीरदार। द मनसबदार, ओके, ठीक है, यस, mansabdars were those who were joined Mughal service. Jagirs were salaries from the mansabdars in the form of revenue assignments. It means the mansabdars received jagirs as their salaries, hence mansabdar depends upon jagirs for their livelihood. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाचन क्षेत्र, use of the term constituency and represent to explain who an MLA and how is person elected. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। 21, an MLA member of legislative assembly is person affiliated to a political party or independent who represents a constitution area. The person is elected in the following manner. Especially area is called the constituency. All the adults who 18 years of age and voters, they vote their candidate for their choice. The person who gets the maximum number of votes is declared elected. The elected representative is called an MLA. Next one, how did some MLA becomes minister? Explain. कुछ MLA जो है ministers बनाए जाते हैं, explain करना है इसको। Some MLA become minister when the party wins more than half number of constituencies in a state. Thus, in a majority, the party which is majority that makes the cabinet, whose members are called ministers. Next one, आगे चलते हैं। How the extrusive and intrusive rocks formed. ठीक है, the formation of, yes, the formation of, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है, the formation of extrusive and intrusive rocks due to the extreme heat in the interior of earth. The rocks are found in the form of molten material called magma. When magma comes out on the surface of the earth, it cools down and turns into a solid rock. The such rocks are termed as extrusive rocks. Example, basalt. Deccan trap is built of basalt. When the molten magma cools down within the interior of the earth, it becomes solid to form intrusive rocks. Examples, granite and gabbro. ठीक है, आगे चलते हैं। Next one, give regions the rainforests are depleting. कारण बताएं, वर्षा वन कम हो रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, what are the regions? Let's see. The rainforests are depleting because of the following reasons. Development activities have been started in the big way, resulting in the cutting of rainforests for various purposes. The indigenous population has been pushed to practice conservation of activities of forest and wildlife. The industries are being set up after clearing the forest. The lumbering has developed. The topsoil was washed away during the rains and lush green forests turned into the barren lands. ठीक है, आगे चलते हैं। Next one, they have come to the section D. Section D पर आ जाते हैं। What are the following people doing at Erode cloth market? Merchants, weavers and exporters. Question number 24 का आंसर्स, ओके, ठीक है। Merchants, they supply the cloth ordered to the garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn and give the instructions to the weavers, also the kind of cloth that is to be made. Weaver, they make cloths and bring this to Erode cloth market for sale. They also make cloth on the order from the merchant. Exporter, they use the cloth for make the shirts to export them as foreign buyers. Next one, आगे चलते हैं, इसी का और है। डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट as well as wages of workers of the garment exporting factory. Do you think the workers get fair deal? Okay, the workers are made to work for the long hours as the garment exporting company. They are kept on a temporary basis and can lose the job if the employer feels that they are not needed. The workers are paid low wages. They do not get a fair deal as they do not have the job security and their wages are low. Next one, Baba
गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक? मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक इज द वर्शिप ऑफ वन गॉड, irrelevance of caste and creed and gender for attaining liberation, the pursuit of active life with a strong sense of social commitment. Nam Dam is a major essence of his teachings. Nam Japa, Kirt Kama, Vand Chakna, basis of right belief and worship, honest living in the helping others, the idea of equality. ठीक है, next one. What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? The major expressed by Kabir and his way of expressing them: rejection of orthodox religion and religious traditions, religion was accessible to all, criticism and external worship of Brahmanical Hinduism and Islam, no caste system, belief in formless God, bhakti and devotion is the only path of salvation. He expressed his ideas through the couplets. ठीक है, आगे चलते हैं. Section E. Read this passage and answer the questions accordingly. ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना, then you have to give the answer of this one. What are the miniature painting? Miniature painting क्या है? Miniatures, as they were same name suggests, they are small size paintings generally done in watercolor and cloth or paper. ठीक है, next one. Which Mughal emperors patronized highly skilled painters? The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters. What did miniature paintings portray? The paintings portrayed court scenes, scenes of battle or hunting and other aspects of social life. Yes, we have come to the question number 27. You have to read this passage. इस passage को आप पढ़ेंगे and then you have to give the answer of these questions. What do you mean by independent media? और censorship क्या है? ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है. तो देखते हैं इसके आंसर्स को. The independent media means that no one should control, influence it, the coverage of news. No one should tell the media that can be included, what should be not included in the news story. When the government prevents either news item or scenes from a movie or the lyrics of a song being shared with the larger public, this is referred to censorship. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन, दैट इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये. Question section F. On the outline of map of India, mark the following: Ladakh, Karakoram Range, Ganga Brahmaputra Basin, Jalai and Puri. ठीक है, इस मैप पर देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिप्रेजेंट द लद्दाख. तो लद्दाख इज समहाउ हियर. ठीक है, ठीक है, लद्दाख. एंड काराकोरम रेंज भी यहीं पर है. समहाउ दिस वन, दिस इज द काराकोरम रेंज. ठीक है, आगे चलते हैं. एंड दिस इज द दिल्ली, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द पुरी इज इन ओडिशा. एंड दिस इज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. समहाउ दिस वन, दिस इज द बेसिन. ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी थी ऑन द मैप ऑफ इंडिया. ठीक है, लद्दाख, काराकोरम रेंज, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, दिल्ली एंड पुरी. Okay, this was the question paper of class 7th, subject social science, annual examination. That's enough for this one. Thank you.